am Nishant, and I am a member of People's Resource Center, one of the organizers of this webinar. On behalf of the organizing committee of Farming the City, a People's Convention on Urban Agriculture, I welcome you all to this webinar series. Before anything, as I was just saying, I would like to tell you that there is an option of interpretation on this webinar. इसमें आप अपनी इस चर्चा को हिंदी में सुन सकते हैं. इसके लिए आप लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के ऑप्शन पे जाएं और वहां पर जापानीज को सिलेक्ट करें. हमें इसमें मगधी, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्टूडेंट हैं, उनकी मदद मिल रही है. Magdi, a student of IP University in Delhi, she is helping us with the interpretation in Hindi. Thanks so much, Magdi. Also, please note that because of the bandwidth issues, we are not playing the video of all the panelists so that there is better connectivity at the receiving end. We will be switching on the video for the presenters when they will be presenting. We are also providing a live summary of the discussion in Hindi and in English. We are not being able to provide a summary in Hindi today, but we are going to provide a live summary of discussion in English. Please keep watching the chat box for the same. Mohini, who is an independent writer and associate of People's Resource Center, she is helping us with this. Mohini, thank you so much. I request you all to type your questions in the Q&A box as and when they come to your mind. But if you can just direct the questions to a specific panelist, that would be superb. And if you want to ask your questions by speaking, then you perhaps will have to wait for the session to end so that we have enough time to take all the questions. You can type your questions in the Q&A box so that it doesn't get mixed up with the chat. We will wait or we will extend the time after the formal conclusion of this webinar at 4:15 to another 20 minutes so that those who want to speak and discuss things with the panelists or the host, they can speak up after the formal conclusion of this webinar. Thank you. Stay till the end. Those of the questions which remained unanswered, we will try to circulate a follow-up email to those who have asked the questions. And please keep checking your email box for the same. A quick note about the organizers. People's Resource Center is a forum to create community resources for social transformation and to build perspectives and alternatives. PRC engages with movement groups and communities in the places where the struggles are ongoing or there is potential struggle over resources, and regularly it undertakes policy monitoring, research and documentation, and grassroots networking to generate resources for collective resistance and creative action. The other organizer of this webinar is Institute for Democracy and Sustainability. IDS has carved out a niche for itself among the people-centric organizations. It works on the issues of sustainable urban transport, equal road rights, right to livelihood, and urban agriculture. And it has been working for the last 3 decades. It's part of National Alliance of People's Movement, Sustainable Urban Mobility Network of India, and other such networks. There is also an option of FB Live. We are streaming it live on Facebook. So if you can please follow our Facebook page, fb.com/resource, RESOURCEGRAB, for any updates. We will also provide the recorded sessions on our YouTube channel. The link to that will be available over email, and also I will post it in the chat box. Some of the very plain modalities, the speakers will be presenting their work for 10 minutes. And after that, the moderator will open the session for Q&A, and you can type your questions in the Q&A box, as I said, and you can wait till the end of the webinar to ask your questions. जो लोग हिंदी में अपने सवाल पूछना चाहें, वो हिंदी में अपने सवाल लिख भी सकते हैं और वेबिनार के खत्म होने के बाद अपने सवालों को बोलकर भी पूछ सकते हैं. ये सेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सवालों को ले रहा है.
Now I welcome Ruchi Verma, who is founder and CEO of Humankind. It is a social design enterprise harnessing kindness to co-create safe, equitable, and compassionate cities. An architect, urban designer by training, she adopts a human-centered approach in her work and strongly believes in inclusion and equity by design. She has been selected as a Dalai Lama Fellow, Lead India Fellow, SSE India Fellow, and she is a mentor of change for Atal Innovation Mission. Welcome, Ruchi, and thanks for being the moderator. Now over to you. Thank you, Nishant. और PRC और IDS को भी बहुत धन्यवाद. The session which I am actually very interested in this issue. So what I will do is each moderator would get some time to present, but then we'll also be able to look at certain questions just after everybody's session. Compassion in the city actually is very close to my heart. It's what we do in Humankind. So before moving forward, I just wanted to set the context of today's presentation and the discussion today. So I will share my screen and we will see what in terms of compassion and urban development can we do while looking at urban agriculture. Nishant, please let me know if it is visible. Yes, it is. Okay, so thank you Nandlalji or Deborah to join us for today's session. I was just going through what we did in the previous sessions and what each of the presenter discussed. For example, how Edible Roots was saying that you get so much joy in urban farming. Or for example, when Vishal mentioned that one can easily start small, just take a bucket and sow some microgreens. So in general, the whole approach around urban agriculture was very focused on, this whole cycle of empathy, awareness about the issue, becoming responsible about the issue, being very motivated about it, and actually act. So drawing some inferences from the report which was shared on day one about invisible farming, something that struck very clearly was that how cities have been declared as a non-agricultural issue. Chahe farming ho rahi hai ya nahi ho rahi hai, it has been actually declared that there has been a stand taken that this will not be part of what is urban in definition. Halaki, what we see is that there are land entitlement and environment issues. There are farmers coming from other states to work as tenant farmers. People who already own farms are not interested. And in terms of every aspect of livelihood, homelessness, every other issue is associated to this. What resonates out of this statement is three keywords which any urban practitioner actually associates with is the designation of it being urban. There is a voice, there is governance around it, and definitely there are principles of exclusion and segregation associated. So I wanted to come down to three basic values which compassion upholds. One, it is that as humans, we already have something unique and we can contribute it in a very special way. So this is basically one universal truth that I believe in. But I wanted to also center us towards the definition of compassion itself. So being a Dalai Lama fellow, we studied that, and this is what His Holiness says, there are two types of compassion. So one of the compassion is something which is like you're born with it. It's something which we refer as mother's compassion, where you automatically have this auto button to feel or capacity to feel and aspire someone with an intention to grow. But for example, this type of compassion is reserved for those you love. And now you just understand in your everyday life what promotes this sort of compassion. However, there is a second form of compassion,
which has to be unbiased. And this is where our caring is extended. And this definitely needs to be cultivated. Obviously, there are contemplative practices to be cultivated, but the more you open up to it, the more you see your nuances of everyday life where you're caring and where your help and your empathy matters. So in terms of what I was discussing with these two examples is, if you look at the whole idea of nurture, if you look at the whole idea of food, or even if you look the idea of care, which one needs more and which one, how do you deliver it? The whole question across invisible farming came to like, what can be the scale of compassion in urban life? Is it associated to already those employed? Is it associate, does it have a gender? Like we understood from the report that women work in saag and other vegetable fields. So is it gender based? What about the animals? What about practices like composting? What about looking at it as a hobby? And what about the larger interconnected system of governance, other city systems and people? What can professionals do about it? And this is what we need to understand, the concept of Ubuntu in compassion in the city, that it is all interconnected. At the end, the food you eat has come across village or a nearby farm, and it's on your plate. And the whole sense of connectedness, self-care needs to be understood through this whole principle of an interconnected humanity in cities. So without further ado, I'll introduce our two speakers. We have Nandlal Masterji, who has been in the social service sector for the last 22 years. He's actually created a seed bank and has organized about 3,000 workers in a union. He works he experiments organic farming with his wife in Varanasi, and Nandlalji would be speaking first and sharing his experience and his journey of his own experience of rooftop gardening. The second is Deborah. She is actually a researcher, and a very interesting way of how her own research brought her more closer to farming. She works in her own research, she works with school children, and her session is titled Nurturing Naturalists. So I open the floor to our speakers. Nandlalji, over to you. Nandlal ji के बोलने से पहले I would like to say that the interpretation will be muted for this time. We'll not be able to provide an English interpretation of what Nandlal ji is going to say. His presentation is in Hindi. So please switch to the English track. Okay. नंदलाल जी, आप म्यूट पे हैं, उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 अभी आ रही है आवाज मेरी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और खास तौर से रुचि जी को, निशांत भाई को और बड़े भाई राजेंद्र रवि जी को, जिन्होंने इस पैनल में हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं बनारस का रहने वाला हूं और एक गांव है नागेपुर। वैसे इस समय ये गांव बहुत पॉपुलर है क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर आप का हिंदी में सुन रहे हैं तो ये एडॉप्टेड गांव है नागेपुर। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और एक बुनकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 25 साल से सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बुनकरों के साथ छोटे किसान हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं। आज जो मैं बात रखने वाला हूं वो है कि हम छत पर खेती कैसे कर सकते हैं, एक मॉडल के रूप में शहर के लोग इस प्रयोग को कैसे अपना सकते हैं, सेल्फ स्टैंड कैसे हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट में जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसमें भी हम सहयोग कर सकते हैं।
मैं बात शुरू करना चाहता हूं कि मेरी वाइफ जिनका नाम रंजू सिंह है, हम लोगों ने 2006 में शादी किया और 2009 में बनारस में एक छोटा सा जमीन लिया, करीब 1500 स्क्वायर फीट का, और उसमें हम लोगों ने ये अपना मकान बनाया है। और शुरू से ही हम लोग गांव में रहने वाले हैं, तो अ, खेती से, पेड़ पौधों से लगाव होने के कारण हम लोगों ने एक स्पेस यहाँ पर भी रखा कि अपने घर को थोड़ा हरा भरा रखना है। तो शुरुआती दौर में तो हम लोगों ने जो भी शो प्लांट हैं गमले में उसको लगाया, कुछ पौधे जमीन पर भी लगाया। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बढ़ा और हम लोगों की थोड़ी और उसमें उत्सुकता जगी, और उसके बाद पिछले 5 साल से हम लोगों ने छत की खेती का एक आइडिया स्टार्ट किया। और एक तरीके से आइडिया मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बड़े भाई राजेंद्र रवि जी की प्रेरणा है, क्योंकि ये लगातार फेसबुक पर दिल्ली में जो अपने क्षेत्रों पर इन्होंने छोटे छोटे प्रयोग किया, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने ये बनारस में शुरू किया। और आज हम लोग काफी पॉपुलर हैं अपने न केवल मोहल्ले में बल्कि बनारस में, कि छत की खेती को कैसे हम लोग जो है कि शुरू कर सकते हैं, और ताजी हरी सब्जियां कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास जो है 150 से 200 गमले हैं, जिसमें हम लोग तीनों मौसम में, गर्मी के दिनों में तो काफी कम है, लेकिन जाड़े के दिनों में और बारिश के दिनों में काफी हम लोग उसमें सब्जियां लगाते हैं। और इसके साथ ही साथ अपने छत पर हम लोगों ने एक छत से 1.5 फीट ऊपर जो है करीब 30 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा एक परमानेंट जो है कि वहाँ पर एक गमला के रूप में हम लोगों ने क्यारी बनाया है, जिसमें गांव से उसमें मिट्टी ला करके डाला है। और घर के हमारे जितने भी प्रकार के कचड़े हैं, जो हरे कचड़े हैं, खासतौर से किचन की जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं, वो सारे के सारे हम लोग उसी में डंप करते हैं। और उसके बाद वो इतनी अच्छी उसकी मिट्टी उर्वरक बन गई है कि कोई भी हम लोग सब्जी लगाते हैं वो काफी जो है कि वो देखने में विश्वास नहीं होता कि ये छत पर लगाया हुआ है। मैंने चैट में 2 लिंक भेजा हुआ है, जो मैंने अपने फेसबुक का लिंक भेजा है। एक जाड़े की खेती का है और दूसरा जो है कि बारिश की खेती का है, कि कैसे हमारा पूरा छत एकदम गार्डन की तरह दिखता है। और ये आप सब लोग जो है कि इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। जाड़ों के दिनों में हम लोग जो मुख्य सब्जियां लगाते हैं, जिसमें गोभी है, टमाटर, बैगन, पालक, मूली, लहसुन, धनिया, ये सारे जो है कि सब्जियां इतनी हम लोगों को पर्याप्त मिलती है कि सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि हमारे घर में 2 हमारे किराएदार हैं उनके लिए भी पर्याप्त होती है। और कभी कभी तो बहुत बार हम लोग इनको गांव तक भी ले जाते हैं, अपने परिवार वालों को या अपने पड़ोसियों को भी देते हैं। अगर आप उस लिंक को ओपन करेंगे जो चैट में मैंने आप सबको भेजा है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी हरी भरी वो खेती दिख रही है। इसी प्रकार बारिश के दिनों में जो हम लोग मुख्य खेती लगाते हैं, जिसमें तरुई है, लौकी है, नेनुआ है, चिचिड़ा है, भिंडी है, करेला है, कोहड़ा है और पालक है। ये इतने प्रकार की सब्जियां हम लोग गमले में और जो छत के ऊपर क्यारी बनाए हैं उसमें हम लोग लगाते हैं। गर्मी के दिनों में चूंकि बारिश ज्यादा होती है, सॉरी गर्मी ज्यादा पड़ती है और पानी की काफी जरूरत पड़ती है और छत काफी गर्म होता है, तो ज्यादा तरह की खेती नहीं कर सकते हैं हम लोग। लेकिन भिंडी, टमाटर और पालक 3 ऐसी सब्जियां हैं जिसको जो है कि गर्मी के दिनों में आप सब हम सब लगा सकते हैं और वो बहुत अच्छी पैदावार देती है। तो एक तरीके से शुरुआती दौर में तो हमने सिर्फ शौकिया के तौर पर हम लोगों ने इसको लगाया, प्रयोग किया, लेकिन उसकी पैदावार इतनी अच्छी हुई कि अब एक जुनून जैसा है। और वो एक मॉडल के रूप में हम उसको देख रहे हैं कि ये पूरे मॉडल को जो है कि जिनके पास भी जो है अगर अपना घर है या ओपन उनका छत है तो उस मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जरूर जो है कि वो
अपने घर के लिए अच्छी ताजा और सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। दो चीजों को और मेंशन करना चाहेंगे। एक तो यह है कि जो भी हम लोगों ने ये सब्जी लगाया है, एक करीब करीब जो है कि ऑर्गेनिक है। इसमें ज्यादा हम लोगों ने जो है कीटनाशक दवाओं का या रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया है। गांव से कुछ गोबर की मिट्टी हम लोगों ने इसमें डाला है, और फिर जितने भी हमारे घर के छिलके हैं, जो किचन के छिलके हैं, वो सारे के सारे हम लोग अपने वो परमानेंट क्यारी में डाल देते हैं। और अभी वो पूरा क्यारी में अगर आप देखेंगे, जैसे ही बारिश होता है इतनी ज्यादा केचुआ है उसमें कि वो पूरा छत के ऊपर जो है कि रेंगने लगते हैं, और बहुत बार तो लोग डर भी जाते हैं कि इतना केचुआ कहाँ से आ गया। तो ये एक अच्छा प्रयोग है कि आप अपने घर के छिलके को, जो कचरा है, आपको बाहर कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए बहुत यूज का चीज है। और हम अपने जो भी घर में जो भी प्लांट लगाए हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये मैं सबको जो है कि मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो घर का आपका जो कूड़ा है, जो कचरा है, ये कचरा नहीं है, वो आपकी बहुत काम की चीज है। उसको आप रीयूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल जो है कि आप कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और हम सारे लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े वर्कशॉप में, ट्रेनिंग में जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बहुत बार लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास कोई ग्रुप्स नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है कि हम जो है कि अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर एक छोटी सी चीज को अगर हम ये कर लें कि हम अपने स्तर से ये काम कर सकते हैं, अपना जो वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, इसमें हम मददगार हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम ताजी हरी सब्जियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक मॉडल के रूप में मेरा निवेदन है कि हर सारे लोग प्रयोग करें। 3-4 सालों से लगातार यहाँ का बहुत सारे अखबारों ने हम लोगों को कवर किया। बहुत पिछली बार अगर आप देखेंगे, जो फेसबुक पर मैंने डाला, उसको करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया उस हमारे उस प्रयोग को। तो और हमारे जो पड़ोसी हैं, अब धीरे धीरे आकर के हमसे पूछते हैं, सीखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। धीरे धीरे वो अपने छतों पर जो है इसका प्रयोग करें। और शहर के बहुत सारे लोग जो है बहुत बार हम लोग को बुलाते हैं कि जरा हमारे छतों पर भी मदद करें। तो कुछ कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, अगर आप गमले की खेती करते हैं या छत पर खेती करते हैं तो 3-4 चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक तो यह है कि मिट्टी की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद और ऑर्गेनिक खाद होना चाहिए। तो लगभग 50% मिट्टी का, 50% जो है कि उसमें गोबर की खाद होना चाहिए। दूसरा ये है कि पानी का बहुत ध्यान देना है। गर्मी का खेती अगर आप कर रहे हैं तो आपको दोनों टाइम, सुबह और शाम, दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा। बारिश के दिनों में जब आप ये करते हैं तो बहुत बार जो है कि गमले में पानी जमा हो जाता है, या क्यारी में पानी अगर जमा हो गया तो पूरा आपका जो भी पौधा लगाया वो ग्रो अप नहीं करेगा, वो सूख जाएगा, क्योंकि उसको उसमें पानी उतनी ही जरूरत है जितना उसके लिए आवश्यक हो। तो अगर हम क्यारी बना रहे हैं या गमले में अगर हम कोई भी सब्जी लगा रहे हैं तो ये ध्यान दें कि बारिश के दिनों में वो पानी जो है कि काफी जो है कि उसके निकलने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो अनयूज हो। जाड़े के दिनों में अगर हम खेती कर रहे हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें धूप चाहिए। अगर जो भी सब्जी लगा रहे हैं उसके लिए पर्याप्त धूप ज्यादा जरूरी है जाड़े के दिनों में। तो अगर हम गोभी लगा रहे हैं, पालक लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, लहसुन लगा रहे हैं, धनिया लगा रहे हैं, तो उसके लिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उसको जितना ज्यादा धूप मिलेगा वो उतना ही ज्यादा जो है कि ग्रो अप करेगा। तो मिट्टी की क्वालिटी और पानी कितना हमको डालना है उसमें, इस बात का जो है कि हमें ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो जो है कि हम उत्साह में तो बहुत सारे पौधे लगा देते हैं लेकिन वो ग्रो अप नहीं करते हैं। इसलिए मेरा हम सजेस्ट करते हैं, जो भी साथी इच्छुक है, करना चाहते हैं, तो पहले तो हम कहते हैं कि ऐसे पौधे लगाएं जो मरे ना, क्योंकि पहले ही ऐसा पौधा लगा दिए
जो मर जाएगा तो फिर आपका उत्साह टूट जाएगा या आपका जो है आत्मविश्वास टूट जाता है। तो पहले वैसे पौधे लगाएं जो जिसमें आपको काम करने की कम जरूरत है, उसकी देखभाल करने की जरूरत कम है। धीरे धीरे कुछ ऐसे पौधे पर प्रयोग करें। हम लोग मशरूम की खेती भी जो है कि किया, उसमें भी पिछले साल हम लोग सफल हुए। तो हमें लगता है, मेरा दो बातें कह करके खत्म करेंगे। एक बात तो यह है कि एक मॉडल के रूप में ये बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके लिए सरकार से भी बात करनी चाहिए कि जो है कि क्या एक आइडिया जो है कि जैसे आप किसानों को जो है कि बहुत सारे जो है कि फैसिलिटीज देते हैं, तो क्या जो शहर के किसान हैं उनके लिए क्या है आपके आप कोई सब्सिडी की बात करते हैं या उसको जो है कि फ्री में बीज, फ्री में दवा, फ्री में खाद क्या उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी बात यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो शहर के लोग हैं थोड़ा अपना समय जो है कि जरूर, जैसे आप हर एक चीजों में निकाल रहे हैं, टीवी में निकाल रहे हैं, ये सब चीजों में निकाल रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा समय, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। दिन के प्रतिदिन के अगर सुबह शाम के आधे आधे घंटे अगर आप इसके लिए समय निकाल सकते हैं तो इससे जो है कि आप निश्चित रूप से जो है कि हरे और ताजी सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नंदलाल जी। बिफोर आई गो टू डेबोरा, नंदलाल जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो इनिशिएटिव आपने इंडिविजुअल तौर पे स्टार्ट किया, जी, क्या कम्युनिटी में पिकअप हुआ, क्या आपके नेबरहुड में फैला, किस तरह के प्रश्न आए थे, किस तरह के प्रश्न जुड़े हैं? आजकल सस्टेनेबल अर्बनिज्म में लोकलाइजिंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वाराणसी जो हमारी स्मार्ट सिटी भी है, इस तहत आपको क्या लगता है कि एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर ये नेबरहुड लेवल पे किया होता या हो रहा है, तो थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और इन जनरल हमारे काफी ऑडियंसेस हैं जो प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स भी हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव? एक तो 100 से ज्यादा कम से कम बनारस के मैं ऐसे परिवार को जानता हूँ जिन्होंने हमारे इस मॉडल को देख करके अपने यहाँ वो प्रयोग कर रहे हैं और सफल भी हैं। हमारे पड़ोस में तो काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि हर एक लोगों की लगभग छत कुछ न कुछ हरा भरा दिख रहा है। वो अलग बात है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि सभी लोग सफल नहीं, क्योंकि छत की खेती के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी उतना समय नहीं है जिस पर हम लोग बात कर सकें। तो निश्चित रूप से ये एक मॉडल के रूप में लोग प्रयोग कर रहे हैं। और अगर इसको ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रुचि है, लेकिन कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, जो है कि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे गमला कहाँ से मिलेगा, पौधे कहाँ से मिलेगा, बीज कहाँ से मिलेंगे, तो ये सारे फैसिलिटीज कहाँ से मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है। तो इसमें कोई ग्रुप, सरकार अगर थोड़ा सा उसमें रोल अदा करें तो एक अच्छा मॉडल के रूप में ये इसका विस्तार किया जा सकता है। मुझे लगता है तो चीनी के बदले लोग सब्जी एक्सचेंज करना आते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छी बात है। तो डेबोरा, आई इनवाइट यू नाउ फॉर योर प्रेजेंटेशन। Okay, thank you, Ruchi. I'll just start my video. Yeah, is my screen visible? Yes. Okay, thank you everyone. So good afternoon, and I'm Deborah. I'll be sharing with you some parts of my doctoral research which I've done in Bombay. And the title of my presentation is that of Nurturing Naturalists. And basically I want to, through my study, present a care-based account of generating environmental motivations through urban farming. This topic is slightly different from the ones that have been presented till now, because here my focus is on exploring the potential of farming in developing ecological sensitivity through educational interventions.
And yet there are also very important linkages to be made with the overall theme of the seminar, especially in terms of the categories that Ruchi shared a while back, that how are these ideas of empathy, care, um, uh, conviviality and collaboration going to help students and youngsters in developing ecological sensibilities. So while this need has been acknowledged for a while, I'll just quote an educator here wherein he points out the problem with environmental education, wherein he's saying that, environmental education curriculum should be interdisciplinary and focus on real practical problems. But school curricula are discipline based and emphasize on abstract theoretical problems. So whereas a curriculum in environmental education is emergent and problematic in that the content arises as students are involved in specific environmental problems, most school curricula are predefined since they're designed to serve predetermined behaviorally specific ends. So that is ends whose attainment can be readily assessed. So a lot of focus ends up becoming on assessment rather than actual experience of the student. So a question has been that, what is the way forward and how can we nurture environmental sensitivity and the motivation to act in pro-environmental ways and not just talk about it. So with that thought in mind, I wanted to explore the context of urban farming for children. And the idea was to explore whether they can understand their connections and their embeddedness in a particular ecosystem. So this is the site of the study, which was basically the terrace of a CBSE school in Mumbai. And this picture was taken about a year after the project started. Initially, it was a completely bare terrace. And if you look closely enough, you will be able to see even a landfill, in the background. And Mumbai has 3 landfills. So the question of waste disposal and waste management was already a very pressing issue that students were familiar with. So this was the background with which the project started. And it was basically, I did this study with 40 students for over 10 months. That was their academic year. And it was an ungraded project, which means that this was not being evaluated formally. And this was done with 2 facilitators, 2 teachers, and 2 school gardeners who were helping. And the major activities that the students were involved in was making a compost pit. That was, they had some space in the ground of their school, so we used that to make a compost pit. They collected dry leaves from around their neighborhood. They were mulching the plants, and we had very low budget, so we were making cardboard planters by salvaging whatever cardboard and packaging material we could get from the neighborhood. They designed bamboo trellises, and they were engaged in plant care, seed saving, and harvesting. So whatever observations I had was basically working with them for over this period of time. So I'll then get into some of the, there were many key practices that were involved in this intervention. So one was like, while they were making compost, there were different ideas and stance that was embedded in the activity itself. So when they were making compost, they had to think about, where they would get the leaves from, how long it would take to compost, what are the microorganisms involved. Similarly, when they were harvesting, they had to look at what was the, in which climate did a particular plant flower or fruit, how to use, because we were using a lot of local plants, they did not even know whether they were edible, how to consume them, for example, ambadi. Then they were looking at, at what stage would the plant, the fruit be available for eating, and at what stage would it be good to leave it for saving seeds for the next season. So while they were engaged in this activity, they were also thinking about all the different connections that are involved in growing plants per se. So based on this interaction, there were certain
themes that sort of started emerging with time. And one of these themes we are terming as somaesthetic interactions, where soma basically means body and aesthetic is the appreciation, a sensual appreciation of the immediate environment. So for example, a student commented, that we have never touched plants this way earlier. I mean, we play on the grass, but not this way, to take care. This time we learned how to grow the plant, otherwise just the book says that just drop a seed and the plant will grow, but that is not what they observed. I mean, they saw that it was much more complicated than that. So students' engagement with plants became very rich and visceral. I mean, so they were touching, they were smelling, they were tasting, and that in turn sort of expanded their experience of the environment. And based on those interactions, even if they did not know the names of the plants, they had their own ways of naming. For example, they would call some plant as, oh, that has waxy leaves, this has thick leaves, this has this minty taste, this is a sour tasting plant. So that was their way of identifying and forming connection. Sorry. Similarly, there were these instances of what one could term as enchantment. And this is to describe how certain observations became very significant emotional experiences because they were situated within the farming experience. So things that one may have just seen every day, but it does not really form a connection unless you're involved in it. So in this case, for example, with the farm growing, they started observing earthworms or red wrigglers and mushrooms popping in the monsoon season, and even these snails being seen on the soil. So one student in fact said, oh, I mean, should we keep some leaves separately for the snails? I mean, they would also want to eat, right? We shouldn't harvest everything. So these kind of discussions would happen. And so this scholar called Bennett, she uses this term enchantment to basically describe these kind of affective moments. And the argument is that such encounters are very critical in seeding empathy and generosity towards the more than human world. So the fact, I mean, it sort of boils down to the question that, why should I care for something unless I form a relationship? And so the argument is that these kind of moments are very crucial and critical in forming the relationships that will actually seed a caring stance towards the world. So another interesting experience that happened was that the children became the sort of hook in gradually drawing parents into the farming practices, who sort of moved from becoming passive spectators to actively supporting their children's interests. So because they would do something on the school terrace farm, and there are high rises all along the school, so some of them could even see the terrace from their apartment building, and they would tell their parents that, look, we are growing this, and can we grow this at home? So for a parent, for example, remarked that he wants to be with plants all the time. We had a few plants at home, and now he's keen to shift them off to the new house. So we are planning to make a small vertical ladder type planter in our new home to support his passion. So then another parent commented that he has become keen on using wet waste to make manure, so we are saving all greens and all the wastage in a bag for him. He also regularly waters the plants himself and does that mulching thing he has learned in school. So even if they were themselves not very keen or involved in at the beginning, the interest that the children were showing was sort of pulling them in. And more interestingly, families which had an older generation living with them saw that the grandparents were more indulging of the students because they had previous experiences of farming. So for example, one student commented that earlier my grandmother, when she mentioned gardening, I wasn't very interested because I didn't know anything about it, so I just avoided this topic. But now that I have seen so much happening, it is so exciting, I have started to help her out. So in fact, when I told her about this terrace farming, she got hyped. I mean, totally hyped. The same day, she did not tell me. She went to the nursery and bought a few saplings, seeds, pots, mud, and now we are growing a lot of stuff. So in this case, so
there is this even bonding of knowledge, which given that most students are like second or third generation citizens in a city, they are not very aware of what kind of indigenous knowledge and farming activities that would happen, and this became a sort of bridge wherein the older generation also felt legitimized and their knowledge also felt validated. So Deborah, 2 more minutes, please. yeah, I'm just about to end. Okay. So so these are just some glimpses from the farm in different seasons where they were like doing mulching or harvesting and observing different kinds of biodiversity on the farm. And so just to generalize, what we saw was that basically these farm experiences serve as a sort of a positive feedback loop where it is generating these new community interactions based on empathy and care. And when they are sort of tuning in, they are also strengthening the kind of somesthetic interactions they have with the farm. And that is sort of continuously feeding into also the community participation. So just to sort of conclude, what we are saying is that capacities, so basically all these practices and the actual, the seeds, the soil, the plants, they matter in a very real sense, because it's not that you need to come into the field having some environmental ideas. Just by participating in these practices, the environmental ideas can form, and the evolution of values is having through material and involvement. And also we want to foreground the idea of affective emotions in generating what is called an ethic of care. So building a meaningful relationship with environment requires an immersive sensorium-based experiences which generate the rich moral imagination necessary to think and act in pro-environmental ways. So that's about it. And there were many people involved in the project, and I'm very thankful to the students and the teachers who have been extremely supportive and enthusiastic. So that's about it. Yeah, thank you. Thank you, Deborah. Very fascinating. My question to you here would be, concepts like somesthetics are usually already embedded in our everyday life, but because of the busyness, we kind of ignore or forget that. So in your own experience and coming from the design community, we actually try to use all our senses when we try to, design or plan cities. But in your own experience, how were you able to crystallize or distill this concept to the schools or to the, parents even, irrespective of it going via the child or not? Yes. So what I wanted to sort of focus on was this. You're right that somesthetic interactions are happening any which way. It is more a question of what do we want the students to really be able to experience and feel. So in this case, the idea of having growing edibles particularly, wherein, and also giving them enough time to absorb a certain experience. So the greatest challenge in the school is that because they are so time stressed, these kind of activities take on a very utilitarian perspective. So you quickly go in and you have like 10 minutes where you maybe just quickly water the plants and come back and then talk about the biology of it, that okay, did you observe parallel venation or reticular venation, or did you observe the biology? So that completely turns the experience on its head. Because for them to go and be able to spend that time to, let's say, see some plant flowering, or go and see. So here almost half the session went in unstructured observation, and being able to hook onto their something that could hook onto their attention was very necessary for them to get interested and excited. I mean, that excitement cannot be passed on from arbitrarily. It has to be felt. So the aesthetic part can only become important when all these senses are given enough time to sort of
perceive things from their surroundings. So in this case, the idea of having edibles, which meant that they were supposed to taste, they were supposed to smell, that sort of helped create those initial hooks. So Great. Thank you. Before I open, there are certain questions, but before I open it, I would actually like to extend the discussion about compassion in city with Rajendra ji, and bring in the other aspects of urbanization and the challenges associated with urban agriculture. We went over them on day one. So, Rajendra ji, my question to you is, at this point and moving on, how do you see urban agriculture being integrated, where we are actually in Delhi looking at the Master Plan 2041, where we are actually looking at sustainable development goals and the new urban agenda? Every policy, how does it actually include? What would be your recommendations? Rajendra ji? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो शहरीकरण का जो पूरा अवधारणा है वह सृष्टि के खिलाफ है, और यह इस तरह से खिलाफ है कि सृष्टि में वो सब चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, छोटे से लेके बड़े तक जीव जंतु, लेकिन मनुष्यों ने यह सोचा कि ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए है और हम इसका जैसा चाहे उपयोग कर सकते हैं, और उसी थ्योरी से ये शहरीकरण निकला है। जब मनुष्य ने उस थ्योरी को निकाला तो अब बाकी जो मनुष्यों के अंदर या जो मानवीय समाज में जो डिफरेंसेज है, जो बहुविधता है, उसको ऊपर अटैक है। इसको अगर आप समझे कि खेती का जो विचार है वो दरअसल प्रकृति से जुड़े हुए जो गतिविधियां हैं उससे जुड़ा हुआ है। और जैसे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अपने शरीर के जो भी बनावट है उसमें कोई ऑपरेशन से कोई बाहरी तत्व डाल देते हैं तो उससे अवरोध पैदा कर सकता है, जैसे कोई नस हमारा जाम हो जाता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर जाम हो जाता है तो वो पूरा का पूरा हमारा शरीर का जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है। तो शहर में जो खेती की जो बंदिश है वो पूरा प्रकृति के साथ जो मनुष्य का जुड़ाव है वह उसी राय पे आधारित है। इसको अगर आप ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि खेती नहीं होने के क्या क्या दिक्कतें आई है और वो दिल्ली में क्या है और पूरे देश में क्या है। उसने हमारे बाकी चीज़ों के तरफ नज़रिया बदल दिया है। जैसे वेस्ट के प्रति, कचरे के प्रति जो हमारा नज़रिया है वो संरक्षण वाला भाव, उसको सहेजने वाला भाव से आगे बढ़ करके नफरत का भाव हो गया है। हम अपने द्वारा पैदा किए हुए जो वेस्ट है उससे ही नफरत करने लगते हैं और उसको किसी तरह से हम छुपा करके पड़ोस में फेंक देते हैं। लेकिन यह परंपरागत समाज में ऐसा नहीं होता था। हमारे घर में चाहे खाने के बाद हाथ धोते हैं वो पानी को भी एक बर्तन में रखा जाता था और उस पानी का इस्तेमाल हम अपने पशुओं के लिए देते थे और जो पशुओं का जो वेस्ट होता था वो अपने खेत में देते थे और खेत का जो वेस्ट होता था हम इस्तेमाल करते थे और जो उपज होता था। तो ये जो पूरा चेन है वो टूट गया है शहरीकरण में, तो इसको पुनः स्थापित करना पड़ेगा। और बिना स्थापित किए हुए ये जो भलसवा, दिल्ली में जो भलसवा का पहाड़ है, गाजीपुर का पहाड़ है या जो खोखला का पहाड़ है, आप देखेंगे कि बहुत पहले तक ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। ये पहाड़ हमारे ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, लेकिन अब पर्यावरण जो है एक खास किस्म की परिस्थिति लेके आया है। 2-3 दिनों से हम जो सुन रहे हैं, जैसे कल का जो अनुभव का जो प्रेजेंटेशन था उसमें वो बता रहे थे कि जो जमुना प्लेन पे जो खेती होती है वही लीगल है। अब देखिए कि डीडीए जो है, डीडीए की उत्पत्ति बाद में हुई है, किसानों की वहां पे स्थापना तो बहुत पहले से है। डीडीए बाद में आके कहती है कि वो किसान जो है इलीगल है और ये इलीगल काम कर रहे हैं। तो
एक पूरी प्रस्थापना जो है वो बदलना पड़ेगा। और इसके लिए जो नंदलाल भाई बता रहे थे कि हमें नीति और कानूनों में परिवर्तन करना पड़ेगा, और जो जमीन की उपयोगिता का जो पूरा मामला है, जो शहर में मास्टर प्लान बना करके जमीन की उपयोगिता बदल देते हैं, उस पे चोट करना पड़ेगा। क्योंकि वो एक ऐसी अवधारणा है जिसमें आपकी जमीन, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे, आपकी जमीन है, आप उस जमीन के मालिक हैं, लेकिन वहां पे अगर एक कमरा बांध लेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। माने आपका जमीन है, आपका मालिकाना हक है, वर्षों से परंपरागत से आप उसमें रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा मामला जो है कानूनी तौर पे एक्सक्लूजन पे आधारित शहरीकरण है। और उसी का जो प्रभाव है कि हम अपने खाने के लिए तरसते हैं और ढूंढते हैं कि आज साफ, सुरक्षित और स्वस्थ कारक भोजन कहाँ मिलेगा। तो अगर इससे बचना है तो आपको प्रकृति से अपने को श्रेष्ठ नहीं मानना पड़ेगा। आप प्रकृति के हिस्सा हैं और उसमें बाकी सब चीजें हैं। नंदलाल भाई ने कहा ना कि छत पे जब हम वो खाद रखते हैं, बनाते हैं, तो केचुए आ जाते हैं। अब केचुओं के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, माने आप ऊपर बागवानी करेंगे लेकिन आप पत्ता से भी नफरत करेंगे, आप एक कीड़ा से भी नफरत करेंगे, आप चिड़ी, जो आपको अच्छा लगेगा उसी को प्यार करेंगे, और जो अच्छा बनाने में जो मदद करता है उसके प्रति आपका कोई लगाव नहीं। बिल्कुल। सो यही वो जो 2 फॉर्म्स ऑफ कंपैशन की मैं बात कर रही थी, ये बिल्कुल उसमें वीव इन होता है कि एक आप अपने हाउ डू यू एक्सटेंड केयरिंग। थैंक यू राजेंद्र जी। मैं सवाल लेना चाहूंगी। नंदलाल जी और डेबोरा, आपके लिए सवाल है। तो पहला सवाल मैं राजू जी का लेती हूँ, हमसे नेपाल से जुड़े हैं, और उनका सवाल एक नंदलाल जी के लिए भी है और एक डेबोरा के लिए भी है। तो राजू जी पूछ रहे हैं कि रूफटॉप वेजिटेबल फार्मिंग इज गुड एंड वी कैन गेट ग्रीन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स from our own production, but all houses may not be appropriate for vegetable farming. Are there any standard from engineering perspectives from the designing period? Are there incidents regarding the issue and homeowners have faced problems with where the houses have broken? नंदलाल जी, आपको सवाल है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। इस सवाल को अगर हिंदी में ही बोल दें तो बहुत लोग को समझ में आ जाएगा। नंदलाल जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो। देखिए, जब हम छत की खेती की जब बात करते हैं तो ये जरूर, जब हम मकान बनाते हैं तो हम एसी का हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट तो रहता है कि इससे एसी के लिए कहाँ जगह होगा, फ्रिज के लिए कहाँ हम करेंगे, वाटर कूलर कहाँ लगाएंगे, बाथरूम कहाँ बनाएंगे। तो ये अगर पहले से अगर हमारे दिमाग में रहेगा कि नहीं, हमारा जो हाउस है वो ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, हमको इसमें जो है कि प्लांट लगाना है, हमको छत की खेती के, तो जरूर अगर आपके दिमाग में रहेगा तो अगर मकान आप बना रहे हैं तो उसमें ये मकान बनाते समय वो डिजाइन देखना पड़ेगा कि हमारा धूप किधर से निकलेगा, छत पर धूप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस एरिया में हमको कंस्ट्रक्शन करना है, किस एरिया में नहीं करना है। तो ये बात जो है कि ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर हम छत की खेती करना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर खेती के लिए 2 चीजें एकदम जरूरी है, 3 चीजें, एक तो हवा और पानी, और तीसरा जो है कि सूर्य का प्रकाश। तो ये तीनों का जो है कि आपकी छतों पे उपलब्धता है कि नहीं है, ये इंश्योर करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर जब मकान आप बना रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें जैसे बाकी चीजों के आपके डिजाइनिंग में है कि हमारा बाथरूम होना चाहिए, कि मॉड्यूलर होना चाहिए,
हमारा एसी पॉइंट भी होना चाहिए। तो ये जो है कि छत की खेती का अगर आपके दिमाग में है तो उस आधार से आप बना सकते हैं। धन्यवाद नंदलाल जी। तो नंदलाल जी एक्चुअली जवाब ये दे रहे थे कि राजू जी ने हमसे पूछा था कि घर कैसे होने चाहिए ताकि जब हम टेरेस गार्डन लगाएं तो छतें टूटे ना। दूसरा सवाल डेबोरा, ये आपके लिए है। राजू जी लिखते हैं, some of the urban people used to express that it is wastage of time and need more resources, but no returns from urban farming. What do you think? At the same time, is there any study or information how much contribution is from urban farming? Is it measurable? As a researcher, what do you suggest to the government for the promotion of urban farming in COVID, in line with COVID? Yeah, okay. Thank you for the question. So I think the question has, there are actually 3 questions embedded in it. One is the idea of whether urban people, find it a wastage of time and in terms of needing resources, which is usually not the case once they start doing it. But at the same time, it is true that there is a significant learning and a motivation curve associated with starting, urban farms. So what is helpful is the idea of having community farms where people can actually come and volunteer at these spaces without feeling the pressure of investing too much in terms of resources. So for instance, Mumbai has a couple of community farms, which are basically these common spaces which have been donated by institutions, and a lot of people just come there initially to start feeling comfortable and with the idea of what is involved in farming, how they can take it up. And once they feel comfortable, in parallel they start doing things back at their home, which is what was happening at the school as well, because many students, for example, had never even, let's say, watered plants at their home. So only when they had some positive experiences at the school, they felt comfortable starting something back at their home. And so once there is that feedback, then it takes a life of its own. So even if they do think that, oh, it's difficult, it's like starting anything new. I mean, and what kind of support can be provided for them to be able to take this up in a constructive manner. So I would say that there is a need for facilitation and some hand-holding by people who are already doing this. For example, like Nandalal ji was telling that at his place in Varanasi, when he started doing it, people they felt encouraged just by seeing it first, and then they come to his place and then they start doing it. So if that proof of concept did not exist, people may not have wanted to take it up. So these are some issues. And the second part being about contribution. Is there the contribution of the urban farming? So I think so one would be at just the physical level, like how much I mean, which was a more quantitative question, that how much is it possible for one to grow. And I think some figures were provided by earlier speakers, where they were saying that 200 square feet of area can easily provide for a family of 4, and so on and so forth. So it also depends on how many terraces can be used. But for me, the more interesting notion is to see what changes it brings about in the people itself. So which is a emotional and a cognitive contribution of urban farming, because once they start doing that, there are all kinds of connections which become important. Because now when you are using the soil to grow food, you are concerned about what is it that is in the soil. So if you start finding plastic in the soil, you would want to know, okay, where is this plastic coming from, and how can I compost in a responsible way? Or if you're using water, then okay, what is the source of the water, and how can I do, let's say, grey water recycling? So many questions, and those connections become very real when you're engaged in the practice itself, and things become that concern becomes very organic in some sense. So that is a more important contribution for long-term changes. So
which is more difficult to measure, for which we need many more qualitative research happening in India. So then I think the third question was the suggestions for government to promote. So, so one thing, like some volunteers here have done, I think, in a very successful and good way, is using these BMC parks, which are not otherwise maintained very well, and converting them into food gardens, which are managed by the local community. And whether these kind of common spaces, I mean, can the BMC and the local, let's say, these resident welfare societies have some understanding where these spaces, because especially cities don't have that kind of land, even these small spaces can be sort of be either given to a nearby school or given to a apartment complex, where they are said that, okay, why don't you start composting and use this place to and whatever harvest you're getting can be shared amongst the residents themselves. So you can have very, very small local, hyper local farmer markets, and can that be facilitated? And especially when apartments are now coming up, like one major thing is, like, like what again Anlaj was saying earlier, that you would think about where to place an AC. So I would say similarly, whether you could incorporate, let's say, a composting area in the house, and or in the apartment complex. So there's such things, I mean, the affordances of the place itself make it simpler for people to take up these kind of activities. So yeah, that would be. I can't hear you, Ruchi. I think you're on mute. Okay. There's another question here from Sophie. She's actually addressing this to either me or you, but I'll let you take that up, because she's asking that, do you think any scope of using urban agriculture as a way of social, to address social good margins and create sustainable in this through organic and regenerative farming? Yeah. We saw on the day one how these concepts are very interlinked, and how most of the farmers, like I mentioned in the from the report, are not interested to do the farming, and therefore there are a lot of tenant farming, and they don't have basically, yesterday Anubhav showed how from the Bela state there have been multiple demolitions, and just to create a land which is more could act as a river belt, but not actually giving food from, there's no production around it. So how do you think these concepts around urban agriculture can be used to address social inequality? और फिर नंदलाल जी, मैं आपसे भी यही सवाल एड्रेस करूंगी. Over to you, Deborah. Yeah. So I think one is that this increased sensitivity on behalf of people who are starting to engage in farming related activities can sort of lead them to one, be more aware of, first of all, the kind of issues that farmers, seasonal and especially seasonal workers, may face, and also what kind of farming is happening in peri-urban areas. And this is, to me, an open question, because as of now, the way at least it has developed in India is that you almost see two distinct tracts of practices. One which is in within, like, in the middle class, and the one which is happening on the margins, literally. So for example, Mumbai has this huge tracts of small land which is right by the railways, and that is actually the railway track farms, and they grow a lot of greens, which are, I mean, they're supposedly supply again almost 30 to 40% of the vegetables, local greens that are there in the city. And there is a lot of concern about whether that is which is what I was asking the organizer also day before, that there is a lot of paranoia around it. How safe would it be? So on one hand, in some way, the increased interest also causes more mistrust, that what are we eating, where is it coming from? But at the same time, it can also open up avenues for partnerships, if we were to think that, okay, I mean, if we want to, let's say, actually increase the number of farming spaces within the city, could the people who are currently employed there be also brought in as
project partners in these kind of like the BMC spaces and things like that. But I mean, that is something that has to be done both at grassroots level and policy level. And I don't think it has really reached that critical mass in the city wherein, you know, that many people are involved. So it is something that is, I think, still evolving. And yeah, that's my take on it at least. नंदलाल जी, आपके क्या सुझाव, इसको सोशल इनइक्वालिटी कैसे एड्रेस किया जाए? तो दो चीजें मुझे कहना था। एक तो ये था कि जब हम छत की खेती की बात करते हैं, गार्डन की बात करते हैं, तो जैसे राजेंद्र भाई ने कहा कि हमें फिर एक अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। नजरिया किसके प्रति? उस कचरे के प्रति नजरिया बदलना पड़ेगा, उस मिट्टी के प्रति नजरिया बदलता है, और उस जानवर के प्रति जो देखने में हमारे लिए तो कोई डायरेक्टली बेनिफिट नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो ऐसा है, एक नजरिया में बदलाव आता है। और जब नजरिया में बदलाव आता है तो हमारा मानना है कि जो क्लीन का काम करने वाले, हाशिए पर जो रहने वाले जो शहर के लोग हैं, एक नजरिए में हमारे उसमें भी बदलाव आता है। तो निश्चित रूप ही ये एक सपोर्ट करता है। दूसरा, जरूर हमें एक डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जैसे जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं वो तो लैंडलेस हैं, हाउसलेस हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट जो है कि बहुत सारे बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कि पब्लिक लैंड है सरकार के जो अनयूज है, शहर के अंदर है, तो सरकार अगर चाहे तो वो भी लीज पर दे सकती है ऐसे रहने वाले जो शहर में जो गरीब लोग हैं कि भाई ये 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए हम दे रहे हैं, तुम्हारे लिए फैसिलिटीज सारे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए यहाँ पर खेती का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे एरिया जो है कि शहर के अंदर भी हैं जो कि वैसे ही वीरान पड़े हुए हैं, वो किसी तरह का इस्तेमाल नहीं है, वो सरकार अपने कब्जे में ले रखा है। तो क्या सरकार जो है कि गवर्नमेंट जो है कि इस तरह के जमीनों को, इस तरीके के बिल्डिंगों को जो है कि परमानेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो लीज पर जो है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए खेती के लिए प्रयोग के लिए दे सकती है। धन्यवाद। मैं काफी क्वेश्चंस देख रही हूँ चैट पे जो मंकी मेनेस के ऊपर है, या किस तरह के फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं, किस तरह के प्लांट्स इजीएस्ट हैं छत पे, उसका क्या बेयरिंग होगा। तो मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये जरूर बताना चाहूंगी कि पिछले सेशंस में हम लोग ने डेफिनेटली कवर किया है कि रूफटॉप गार्डनिंग में किस तरह के प्लांट्स और किस तरह से टेक्निक्स यूज की जाए जिससे हमारी छत बिगड़े ना। मैं एनकरेज करूंगी आप लोग को कि प्लीज गो बैक एंड चेक दो सेशंस। ये सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब, इनके पीआरसी के यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। एक बस मेंशन करना चाह रहे थे, सॉरी, क्योंकि एक साथी ने पूछा था कि मैं 15 दिन बाहर हूं और छत की खेती मैं कैसे कर सकता हूं। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, तो मेरा तो हमें 1 या 2 दिन के बाद उसको देखना ही पड़ता है, लेकिन मैंने जो है कि 2 बार मैं यूरोप में गया था और कुछ जो है कि फैमिली को मैंने विजिट किया था, तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो कि उनका जो वाटर टैंकर है उससे जो है कि डायरेक्टली जो है कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी से जो है लिंक किया हुआ है, और हर एक गमला जो है उसके पास जो है कि एक पाइप है, और उन्होंने एक टाइम सेट कर रखा है कि जो है कि सुबह शाम उसको कितना पानी की ज़रूरत है, और वो ऑटोमेटिक जो है कि वो ओपन होता है और उसको पानी मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी उसको पानी का ही होता है जब हम छत की खेती करते हैं। तो जो कंपोस्ट खाद है या बाकी चीज़ें हैं, निराई गुड़ाई का काम है, वो तो हम सप्ताह में भी कर सकते हैं, लेकिन पानी के लिए रेगुलर, तो ऐसे टेक्नोलॉजी को भी जो है कि किया जा सकता है, जैसा वेस्टर्न बहुत सारे देशों में जो है कि मैंने देखा है। दूसरा सुझाव इसमें ये भी है कि क्या आप अपने आप को अगर सोसाइटी और कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं तो जरूरी है कि घर पे करा जाए, या जैसे दबोरा ने ऑल्सो सजेस्ट किया मिलजुल के कम्युनिटी के साथ करे, उस तरह से सोशल कोहेजन की स्पिरिट बढ़ती है और उस तरह से आप
जी बिल्कुल ऐसा नहीं, हम हमारे घर पे मैं और मेरी वाइफ हैं और दोनों सोशल एक्टिविस्ट हैं, और बहुत बार हम लोगों को भी हफ्ते भर के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो हम अपने पड़ोसियों को, जिनको हम अपना ये सब्जी खिलाते हैं, तो उनको हम चाबी पकड़ा देते हैं कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी छत पर जो है कि उसको गमले में और सब्जियों को पानी दें। तो इससे एक रिलेशनशिप जो है कि बढ़ता है हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ। तो जरूरी नहीं है कि होल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, डिपेंड करता है कि हम कैसा रिलेशनशिप हम अपने पड़ोसियों के साथ है। धन्यवाद नंदलाल जी। निशांत, हम लोग 4:15 पे हैं, अगर आप बोले तो क्वेश्चंस लें या कंक्लूड करें? I guess we can take 1 or 2 questions if there can be quick responses to that. There's a question by Sophie Brogger again. If you can take that. Sophie's question we did take up. Okay, Which okay. one? I don't see any new question. For Deborah or Ruchi, in terms Yeah. of compassion, you did take that. Yes. Okay. So एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है राजेंद्र भीसे जी का। इसमें लिखा है अर्बन एग्रीकल्चर को अगर अर्बन प्लानिंग या मास्टर प्लान को लिंक करना है तो पहले हमें इसे पोजीशन करना पड़ेगा, जिसमें फूड सिक्योरिटी, शहर का पर्यावरण और पोल्यूशन, हाउसिंग के साथ और डिजाइन के साथ संबंध, उसे ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे करें। ये तो एक अपने में ही पूरा नया सेशन है, पर डेफिनेटली सस्टेनेबल अर्बनिज्म का जो कॉन्सेप्ट्स आजकल चल रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 11 और न्यू अर्बन एजेंडा अपने में बता रहे हैं, कहीं ज्यादा तौर पे वो इन इश्यूज को कवर कर रहे हैं, लेकिन समहाउ जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉटम अप और इवन टॉप डाउन, जैसे पॉलिसीज में इसका पोजिशनिंग, इसको कैसे लाया जाए, इसमें काफी मेरे को लगता है काफी चर्चाएं करनी पड़ेंगी। अपने में ही ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। राजेंद्र जी, अगर इस पे अगर आपको थोड़ी कोई राय देनी हो। देखिए, इसमें मूल जो समस्या है वो अर्बनाइजेशन के अवधारणा को लेके है। तो अगर उसको एड्रेस करना है तो जो भी सोशल मूवमेंट, जो सोशल इनिशिएटिव है, उसको अर्बनाइजेशन को नए तरीके से देखना पड़ेगा। और दूसरा कि जो इसमें उपभोक्तावाद का जो बड़ा नजरिया है कि आपको जितना पैसा आपके पास है उतना ही सामान आप ले सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप जितना चाहे पानी खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है तो जो भी सुविधाएं चाहे ले सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हमको लगता है कि अगर आप बहुत माइन्यूटली स्टडी करें, जो हम लोगों ने स्टडी किया है, तो उसमें बहुत 2 अलग अलग लोगों को हम उदाहरण दूंगा। एक गरीब आदमी जो बिहार से माइग्रेंट होकर आया है, वो कहता है कि मैं खेती करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये इसकी जो नुक्स है, इसका जो तकनीक है वो मैं जानता हूँ, और मैं फैक्ट्री में जब जाता हूँ तो मेरे वहाँ पे मेरी बेइज्जत होती है और लोग कहते हैं कि तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुमको नहीं आता है। और यहाँ जब मैं रहता हूँ तो मेरे को खुशी होती है कि जो मेरी हुनर है परंपरागत, उसका उपयोग करता हूँ, और इससे हमको सुकून मिलता है। तो एक जो भी आप काम करते हैं उससे सिर्फ आपको आर्थिक लाभ मिलता है कि सुकून भी मिलता है। दूसरा, जो बड़े लोग हैं जो खेती में लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी पैसा तो बहुत हमने ले लिया, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं मिला, तो अब सुकून के लिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। और ये सब चीजें हमको लगता है कि अगर मास्टर प्लान का जो पूरा विजन है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बिल्कुल खिलाफ है। मास्टर प्लान कोई चुने हुए जो नगर निगम के पदाधिकारी, चुने हुए जो पार्षद हैं या विधानसभा के हैं या लोकसभा के हैं, ये सब बिल्कुल नहीं बनाते। ये आपको DDA जो है वह है ब्यूरोक्रेटिक इंजीनियरों का स्वर्ग वो बनाता है। तो एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा। और जो नंदलाल भाई ने कहा कि जो तकनीक है, जो प्रो पीपल तकनीक है, जो हमारी जो क्या कहते हैं परेशानियों को कम करता है, उससे कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो विज्ञान जितना हम उन्नति किए हैं उसमें बहुत आसानी से नाप सकते हैं कि शहर को हम
कितनी जरूरत है, खाने की जरूरत, वेस्ट निकालता है, पानी निकलता है, वो कहाँ जाएगा, ये सब माप करके हम शहर का निर्माण कर सकते हैं। और उसके लिए लोगों को इकट्ठे आना और अपनी आवाज उठाना है। इसी एक ये जो अर्बन फार्मिंग का जो श्रृंखला चल रहा है, उसका एक मकसद यह भी है कि जो छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं उनको कैसे हम इकट्ठा लाएं, और इसके लिए 1 तारीख की हमारी वो मीटिंग होने वाली है। धन्यवाद राजेंद्र जी। तो मैं एक्चुअली फॉर्मली सेशन थोड़ा कंक्लूड करूंगी। नंदलाल जी और डेबोरा, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि जो लोग और एक्सटेंडेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वी कैन टेक इट अप। 2-3 चीजें जो इस सेशन से आई, डेफिनेटली अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टनरशिप इज डेफिनेटली क्रिटिकल, लेकिन एक तरह से ह्यूमन सेंट्रिक और ह्यूमन वैल्यूज को कैसे अपहोल्ड किया जाए पूरी शहरीकरण के डिबेट में, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। मैं फॉर्मली थैंक करूंगी नंदलाल जी और डेबोरा का और राजेंद्र जी का फॉर टेकिंग अप द क्वेश्चंस। निशांत, ओवर टू यू। Thanks, Ruchi, for wonderful moderation and a very rich discussion today, and for concluding within time. As usual, I would make a request on the part of organizers. We are doing a mutual aid work for workers who are facing difficulties in the times of COVID lockdown. So the details are again in the chat box. If you want, you can please donate generously. We are providing food and monetary support to some of the urban farming workers too. So I think we should finally formally wind up this session. It was again a very good participation. I kept getting some of the requests to send the presentations and a link for video of the recorded sessions. Just I'm going to repeat that this is available on our YouTube channel. If you can visit the link that I'm giving in the chat box, you can see all the recorded sessions so far. Also, all the presentations will be sent over email after the webinar series ends. And we will also be continuing the discussion over email even after this webinar. Thank you for the overwhelming support and participation. We will be staying for a few more minutes so that more people can speak and there can be a discussion on the remaining issues. But thank you for joining. Please join us tomorrow. We will be discussing the linkages with waste in more detail. The theme for tomorrow is waste in the city, and we will be joined by 2 wonderful practitioners of composting. One is a group from IIT Kanpur. Hari and Isha would be joining us, and the other is from Pune, Priya Bhide, who does a rooftop gardening and composting. She will be sharing her experience. Please join us tomorrow 3 p.m. Thank you for today. Those who want to stay, please stay. Yes, please stay safe and healthy, everyone. Thank you, Rajesh. Those who want to speak now, if there are any questions remaining in the text, we can take those up, Ruchi, if you are going to stay for a few minutes. And if there are none, yeah, thanks. And if there are none, we can allow some of the participants to speak if they want to. Please raise your hands. I think if I'm not wrong, Sanjay Anand ji had raised his hand quite early, so I will ask if he wants to ask a question. Sanjay ji, are you here? Okay. So this is not here. Anyone else who wants to ask a question? You can speak up. Just raise your hand, or even type in the chat box. I can see actually a question from Harshal. Yes, please. It was written that most newbies are afraid to start terrace gardening due to fear of failure and humongous effort
and responsibility. So can you publish or create some encouraging videos which cover basic tips and tricks for gardening and farming? So इस सुझाव again tie up होता है awareness, and it's interesting. But Deborah, like you work with newbies, so any reflection on how this was actually, did it tie up with the fear of failure? Yeah, hi. So the thing is that, yeah, definitely, it's better to always start with edibles that are probably easier to grow, which could be even seeds that are found in one's kitchen closet, mustard or like methi and the pudina stalks that you get. I mean, basically starting very small so that one is able to sort of get some confidence with respect to being able to grow something. And I mean, in terms of information, at least I think there are a lot of resources on the internet. And it would always be best to actually find out some space in one's city, locality, to be able to gain some first-hand experience, because no matter how many videos one watches on the internet, it's a bit like swimming. So you do have to get your hands into it. I mean, so there is just and one should not be very scared of facing some initial problems here and there. The main thing is to be able to grow something simple and have some peers maybe in the beginning, so that that also adds to the motivation. So, yeah. Okay. I see that people have joined us. So अपना सवाल आप पूछ सकते हैं. My name is Vidya. हाँ, मेरा नाम विद्या है. नंदलाल जी और डेबोरा, बहुत बहुत शुक्रिया. रुचि, my question is to you. There seem to be a lot of people who are doing a great deal of work all around the world and even in our country as well. But all of us seem to be working in silos. I mean, it's one thing nice that we get to start from scratch, start small, and then eventually grow and become an inspiration to our localities respectively. But why is it that we are not able to make a bigger impact? The amount of damage that we're doing to the environment and ecology is tremendous compared to the amount single-handedly or in smaller groups. So is there any initiative in our country that allows each other and work faster? If you could share that information, I would be very grateful. Yeah, so actually, I believe that, first of all, it's a very complex question. But anyway, looking at whatever is happening in the country, I totally believe that, yeah, it is happening in silos. But also the whole idea about individual success stories that are coming up, it could be very useful once these are integrated in the policies. For example, even what Deborah has shown, there are organizations like So Good, which are working with school children here in the Delhi government. And actually the whole idea is then to scale it into, community farming, when children go back and then they also talk to their parents. Similarly, there are other initiatives happening, but unfortunately, it's not aligned at the moment, and I actually don't have any case study where it is actually being done. But I feel that we are moving in the right direction. In fact, a lot of youth are entering into social startups where they are actually trying to resolve our everyday challenges in the best possible manner. And hopefully they actually start getting weaved into larger urban policies. For example, smaller things like waste have been acknowledged by the Swachh Bharat Mission Urban, but in general, there's lots more to be done. And then this whole idea of urban agriculture, can it be integrated into this larger mission?
talking about happiness curriculum, which is happening in the Delhi government, if that is happening about, trying to uh, bring happiness / compassion in children, where does it go further? How can it be done by actual projects such as what Deborah has shown? How can it actually reactivate communities? So we'll have to work together in terms of both bottom up and top down approaches. But so far, it might be happening in a single community. There are a lot of sectors that need reformation in a very large scale. And I think once we start looking at all of this from the lens of compassion, a lot of humanism will start emerging. Thank you for an honest reply. Great. Raju Kimire ji is saying something. If you want to ask a question, you can. Hello. Yes, you are audible, sir. You can speak. Yeah. Okay. I am Raju Gimiri and I am from Kathmandu, Nepal. This is very good opportunity for me to participate and thank you, Ruchi. I knew from your Facebook wall. Actually, I am child right activist and I am working for the protection of children and families living in urban poor areas. Yeah, I mean, this is good to know about the urban farming and that contribute for the urban environment also. So I have initiated some, something through the child club. For example, one child club in slum area, they are keeping one vessel to plant flowers. That is one thing. And another, my question, I mean, this is generally not to indicating the resource person. Are there any guidelines about the rooftop farming? Just that is one query. And another, I want to share my experience. I mean, just regarding the rooftop farming, actually in the context of Kathmandu, here are the people there, they used to do rooftop farming, but sometimes it is dangerous also. For example, during the earthquake time, many small vessels of the farming thrown from the, fall down from the rooftop and some people died. And another, during the big wind, there is the problem. So, are there any regulation or guideline in your context? But in Nepal, up to now, there is not anything regarding that, but people are using, lot of things. Just, this is my query. I am not being negative, but just want to know going through the out of box. Thank you very much. Thank you, Rajuji. Nishant, maybe you can answer from the research done or from the report if we came across any guidelines. And yeah, so as we discussed on the day one and also in the post webinar session yesterday, the most striking thing about this form of urban agriculture, the rooftop or terrace gardening, is that there is complete silence, complete absence of any kind of regulatory or institutional framework. There's not even a recognition that this kind of thing is done. I think it is not recognized as a farming practice. It is some hobby which people do in their private spaces. So I guess there is need to move towards getting some kind of recognition of this as an meaningful urban activity, which is also leading to a better kind of urban life. But I think in our research, at least, we haven't seen any such guidelines, any such institutional framework anywhere in Indian cities. But I will be happy to know if anyone else can suggest something on this.
ऑल्सो अगर अभी और लोगों को कोई सवाल पूछने हो तो आप हाथ का वहाँ पर एक सिंबल होता है रेस हैंड का, वहाँ पर आप संकेत कर सकते हैं कि आप एक सवाल पूछना चाहते हैं या कोई बात बताना चाहते हैं। जी, राज सिंह बरुआ। सॉरी, आप म्यूट। जी, Can you hear me now? Hello? थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। Can you hear? हाय, bit unclear. Can you try again? Can you hear me now? Yes, please. So basically, my name is Ras. I live in Mumbai. I just want to congratulate everyone for this brilliant initiative. It's the best thing to happen. Apart from that, I have this concern. I did a part of the issue. There any information available in the present situation, people to go to Greece and they don't have access to vegetables. So there is any or production, how possibly they could grow something with the so like ones which I have access to, they talk about cocoa peat, cow dung, vermicompost, and we don't have access to all that. So if someone has any video or some knowledge, we can help a society and grow our own microgreens quick and fast. Plenty of spaces there and plenty of time people have. So I really appreciate if you can, if someone who has done it can practically share with video, which could be shared through YouTube with different people in the society. And that would be really that great. I would love to hear it out. Otherwise, we'll appreciate if you can share the link or take effort in it because it can be propagated. And today's time is the most about it. So that's my question. Thank you. Thank you, Raj Singh, for your comment and feedback. I think I lost you for some of your suggestions, but I think you were saying that we need to show with some concrete models or some kind of examples which people are doing, experiments which people are doing, and propagate those ideas, those experiments widely. I think yes, we need to do that, and this webinar or the formally conceptualized this convention. I mean, the idea was to bring in more and more experiences and these kind of stories, so that there is sort of momentum, sort of enthusiasm for taking up urban agriculture. I think today also we focused on how to bring in or how to support the fascination, this interest in urban agriculture or terrace farming activities. We need to do more work towards that end. And thank you for a suggestion. I think we will try not to lose this group which has formed over this webinar, even if the webinar ends. And that's why, as Rajendra Ravi was suggesting, on May 1, we will be holding a sort of additional session of this webinar, which is not public, but it's only for those who registered for the webinar and who sort of attended some of its sessions, so that we can think of ways to keep promoting urban agriculture in different Indian cities and learn from mutual experiences. Details on that will be sent to all those who have registered, as I had said in the beginning of the session. Now we can take other questions if there are any on the chat. Okay. Okay, I think there are no more questions. We can wait for one more minute. If there are any other questions, any comments, any feedback that you want to share or you want to speak or discuss, you can raise your hand or you can type in the chat box.
Okay. I think we should wind up now. Thank you, Ruchi, for wonderful moderation, kindly agreeing for this help. Yeah, thanks, Ruchi, for the moderation. Much appreciated. Yeah, it was awesome session. Thank you, all the panelists. Sorry. Yeah, sorry for noise in my background. And thank you all the panelists, Nandlalji, Deborah, thank you for your presentation and your responses. Rajendra Vijay, thank you for joining us. He's the Director of Ideas, one of the organizers, and one of the major force who has made it happen. And also all the participants, all the attendees, and the attendees who stayed with us for this long. Thank you so much. Let's join tomorrow to another wonderful discussion. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Thank you. थैंक यू सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद.